Good morning everyone. I am Farman Ali and today we are going to take this exercise which is based on adjectives and its kinds. तो उसके basis पे आपका we have to do these exercises now. Now you can see that what we have to do in this first one. ठीक है, तो हमें करना क्या है इसमें, that we have to choose the correct answer. So there are the two options which are given in the bracket विच आर इन द रेड कलर. ठीक है, तो जो रेड कलर में आपके दो वर्ड्स दिए हुए हैं आपका, सो विच वन इज़ द करेक्ट वन इन द सेंटेंस, तो आपको वो ऑप्ट करना है. देन यू हैव टू ऐड इन दैट ओनली. सो यू कैन सी दैट दिस इज़ द नाउ दैट टू थिंग्स आर गिवन, द लार्जर और लार्जेस्ट आपका of the two houses here. So which one is correct in this? So you can see that the is coming before the adjective because larger or largest, so they both are adjectives because we are talking about the degrees of adjectives here. So you can see that the shows this thing, that superlative degree, so it means we have to use largest here. Okay, now come to the second. My intelligence is superior. Then options are given to and then anyone. So what you have to opt in this? So when superior, junior, so these kind of words come, so we use to, है ना, उनके साथ हम to को यूज़ करते हैं आपका. so it means to will come in this case. Now you can come to the third one. You did not give me. Then there are two options here, some or any or money. So what if somebody asks for money, तो any तो money तो होगा नहीं आपका because that any shows the negative sense. But if you will say some, so it means that it can be a certain amount, तो वो कोई amount हो सकता है आपका. So you did not give me some money. Or what you can say that sometimes you can say any also. Now come to the fourth one, that she is dash than me. So little is uncountable things में use होता है आपका, and they are talking about the person, so it means we have to use smaller here. So she is smaller than me. Clear? Now come to the fifth one, what, which. So there are the two options what we have to opt. So film do you like more, the thriller or the comedy. So when we talk about the choice, so in case of choice we use which. So it means which film do you like more, the thriller or the comedy. So this exercise is over now. Now come to the second. So in the second what you need to do, आपको इसमें क्या करना है, तो पिक आउट द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड्स ऑल्सो. तो आपको इसमें से एडजेक्टिव्स को फाइंड आउट करना है एंड टेल इट्स काइंड ऑल्सो, और उसको काइंड भी बतानी है आपका. नाउ यू कैन सी दैट फर्स्ट सेंटेंस, वी हैड सफिशिएंट फूड टू ईट हियर. सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट एडजेक्टिव्स ऑलवेज कम बिफोर द दैट नाउन. तो यहाँ पे आप देखेंगे नाउन जो है आपका, सो दैट इज़ फूड हियर. सो बिफोर फूड दैट सफिशिएंट इज़ द एडजेक्टिव. बट विच काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज दिस, तो ये किस तरह का एडजेक्टिव है सफिशिएंट, बिकॉज इट इज़ शोइंग द क्वांटिटी हियर. सो इट मीन्स इट इज़ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड. सो हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट. सो हमने काइंड्स में पढ़ा था आपका. सो देयर इज़ अ वन kind also, that is interrogative adjectives, and we make questions by this also. So how many marks did you get, so it means it is a interrogative adjective here, and many is coming as adjective. Now come to the third. Rashi and Sweta are close friends. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं that friends, ठीक है, ये नाउन है आपका, एंड बिफोर नाउन आपका देख रहे हैं क्लोज आ रहा है आपका, मीन्स दैट दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड, दे आर वेरी मीन्स दैट दे हैव गुड रिलेशंस. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दैट क्लोज इज एडजेक्टिव हियर एंड इट्स शोइंग दैट विच काइंड ऑफ फ्रेंड्स आर दे. अगर हम क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पुट अप कर सकें कि दैट विच काइंड, व्हाट काइंड ऑफ, है ना, फ्रेंड्स आर दे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी की बात यहाँ पर हो रही है आपका. Now you can come to the fourth one, that each pen will do the same here. So you can see that the word which comes before noun, that adjective. So यहाँ पे आप देख रहे हैं pen is the noun here, and before that each is coming. And when we talk about one thing, so in this case what we have to do, so we have to say that it is a distributive adjective. So आपका each, every, आइदर और नाइदर नॉर, तो ये सभी आपके क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं आपका.
तो यहाँ पे हम सिर्फ एक हर एक की बात कर रहे हैं, सो दैट्स वाई ईच इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. Now come to the fifth one, that give me some milk in this glass. So you can see that some milk here, है ना. So milk is a noun and before that some is coming. So they are talking about a certain amount. तो ये amount जो है आपका it is a quantity. तो यहाँ पे because milk cannot be counted in numbers, तो इसका मतलब ये है adjectives of quantity की यहाँ पे बात हो रही है आपका. Now come to the sixth one, that I know a naughty little boy. So there is a one boy who is very small, a little boy, and you know what kind of means boy he is. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं that naughty है आपका. So naughty is a adjective and it's a quality of that boy. So it is adjectives of quality. Now come to the seventh. So that is there is little water in the tank here. So you can see that before water little is coming. So it is a adjectives of quantity because we measure water but it cannot be counted, so they are talking about the quantity only, so it's adjective of quantity. Now come to the eighth, many people come here to see the show. So you can see that how many people come here. So many is adjective here, so before people many is added, तो ये adjective है आपका. So it is adjectives of number यहाँ पे आएगा. So when we talk about the countable nouns, तो countable nouns के अंदर हम जो है adjectives of number की हम बात करते हैं, means the things which can be counted in numbers. Now come to the ninth one, I don't like those friends of yours. So we have studied about that demonstrative adjectives also. तो demonstrative adjectives में आपका देखते हैं this, that, these, those. So it means that we specify, ठीक है, नाउन्स ऑल्सो दैट दिस इज़ द पर्सन और दीज आर द पर्सन और दोज आर द पर्सनस. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दैट बिफोर फ्रेंड्स दोज इज़ कमिंग हियर, सो दोज इज़ अ दैट एडजेक्टिव एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. नाउ कम टू द टेंथ, द शेखर इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, है ना. तो शेखर किस तरह का पर्सन है आपका, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. तो बिफोर वर्ड्स फ्यू इज़ कमिंग हियर, सो फ्यू इज़ अ, ठीक है, एडजेक्टिव हियर. सो व्हाट वी हैव टू डू, सो दिस इज़ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है. तो यहाँ पे आप किस तरह का पर्सन है आपका वो, सो मैन ऑफ इट मीन्स दैट ही स्पीक्स लेस, है ना, तो वो ज़्यादा बात नहीं करने वाला इंसान है आपका. नाउ कम टू द 11, दैट व्हाट कलर डू यू लाइक मोस्ट हियर. सो यू कैन सी दैट दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन हियर. सो व्हेन वी आस्क क्वेश्चन, सो वी यूज सम वर्ड्स. सो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है आपका यहाँ पे एंड दैट इज़ व्हाट. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ 12, दिस हाउस इज़ माइन हियर, ठीक है. तो हुज हाउस इज़ दिस, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो दिस है आपका, यहाँ पे हाउस से पहले लग रहा है एंड दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. सो ओके, सो दिस इज़ द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड दिस इज एडजेक्टिव. नाउ 13 में आप देखिए, यू हैड 5 रुपीज़ इन हिज पॉकेट. सो बिफोर रुपीज़ 5 इज़ कमिंग, सो इट इज़ एडजेक्टिव. एंड विच काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज दिस, किस तरह का एडजेक्टिव है आपका ये, काइंड्स में अगर हम बात करें तो. सो इफ़ यू सी दैट व्हेन वी काउंट मनी, तो मनी को हम जो है आपका नंबर्स में वी कैन नॉट शो बट दैट इट कैन बी काउंटेड. तो दैट हाउ मच मनी यू हैव, समटाइम्स वी से इन दिस मैनर ऑल्सो, सो दैट यू कैन पुट इट इन दैट 5 इज़ गिवन हियर. सो नंबर है आपका, तो आप यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में पुट कर सकते हैं इसको. ओके, नाउ 14, खुशी लिव्स इन अ योंडर हिल. विच काइंड ऑफ हिल इज़ दिस, वेयर खुशी लिव, किस तरह के जगह पे आपकी रहती है खुशी, किस तरह के हिल है, दैट इज़ योंडर. सो योंडर इज़ अ हिल हियर, इट इज़ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द, है ना, किस तरह का हिल है आपका, तो क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. नाउ कम टू द 15, सम ड्रीम्स आर लाइक रियलिटी. सो यू कैन सी दैट ड्रीम्स इज़ अ नाउन हियर एंड बिफोर ड्रीम्स सम इज़ कमिंग, सो इट इज़ द, ठीक है, समथिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट. तो यहाँ पे सम जो है एडजेक्टिव है आपका एंड इट्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नाउ कम टू द 11, दैट एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज. सो यू कैन सी दैट, है ना, जो एम्प्टी वेसल्स होता है तो कैसी नॉइज क्रिएट करता है, मीन्स सो मच. सो यू कैन से दिस दैट मच इज़ अ एडजेक्टिव हियर एंड इट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी because we are talking about a sound here, that how much sound does it create. So these are some of the things which we have discussed now. In the third, that write opposites of the following adjectives here.
So there are some words which are given and you have to make opposite of these. So we will talk about this in class. Thank you so much.